Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav, and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday at 11:30 a.m. So, my friend, why the newspaper is important? We'll discuss each and everything is in detail. Before we start, please let me know if my voice is audible. Am I visible to everyone? Okay. So, my friend, this is important to understand about the importance of the newspaper. Majorly in newspaper analysis, we discuss about The Hindu and Indian Express, right? What exactly we discuss in newspaper analysis? We discuss about economy-based news, we discuss about international-based news, we discuss about national news, personal news, science and tech, and apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in newspaper analysis. One great quote by Nobel laureate Malala Yousafzai: let us remember one book, one pen, one child and one teacher that can change the world. And here is questions of the day. We'll ask you the 5 questions, right? And quick tips. और आज क्विक टिप्स हम सीखेंगे निमोनिक्स के मेथड से कैसे ट्रिक्स चीज़ों को हम लर्न करते हैं. दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड सबसे पहले न्यूज़ है आपके सामने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में. सो बिफोर द दीज थिंग्स अबाउट व्हाट इज मेंशन इन द आर्टिकल, we have to understand first about the foundation and the historical background, and very first thing that we should understand about the UCC, which is Uniform Civil Code. Uniform Civil Code ये क्या होती है? पहली चीज़, यूनिफॉर्म द वर्ड इट सेल्फ गिविंग द मीनिंग अबाउट यूनिफॉर्म विच मीन्स एक लॉ होनी चाहिए, राइट? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लियरली सेज अबाउट द स्टेट नीड टू प्रैक्टिस द यूनिफॉर्म सिविल कोड. इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हुई है, और वो स्टेट कौन सा है? गोवा. सो उत्तराखंड असेंबली इज likely to pass the state uniform civil code that will during the 4-day long session this week. What does UCC aim to do? Obvious that देखो UCC का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड which seeks to create a uniform of laws to replace the distinct personal laws for every religion. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. As per the शरीयत, जो मुस्लिम लॉज होती हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट होती हैं, उसमें 4 लीगल मैरिज अलाउड, but as per the Hindu Marriage Act 1954, which only 1 legal marriage allowed. So in short we can say this is uniformity नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो गवर्नमेंट चाहती है इसको यूनिफॉर्म करने के लिए, राइट? सो इन केस ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस. So this stem from Article 44 of the Constitution, which mandates that the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. बट आपको बता दें कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है माय फ्रेंड, ये कभी भी लीगली इन्फोर्स नहीं होता. मतलब स्टेट को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ की परमिशन तो देता है, बट कभी भी आप एक चीज़ जान के रखें, यहाँ पे कभी भी वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, राइट? यहाँ उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है? उसके बाद क्या क्या चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. देखो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिविल कोड, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड. इन केस ऑफ मैरिज, in case of divorce, in case of maintenance, inheritance, adoption or succession of property. So it is based on the premise that there is necessarily no correction between religion and personal law in a civilized society, right? So of course we should to understand about these things is important in uniform civil code.
मैरिज के केस में भी, डिवोर्स के केस में भी, मेंटेनेंस के केस में, इनहेरिटेंस के केस में, अडॉप्शन के केस में और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी के केस में एक लॉ होनी चाहिए इसमें. So, Uniform Civil Code refers to a common set of laws governing civil rights to every citizen. And Article 44 है Directive Principles sets duty of a state for implementing UCC. और उसमें 1954 that passes of Special Marriage Act provides permission of civil marriage above any religious personal law. ये इसके एक टाइमलाइन को जानना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो मेक श्योर वो आपसे हमेशा इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं. 1956 में क्या हुआ? हिंदू कोड दैट विल पास डिवाइडिंग पर्सनल लॉज इन द कॉमन इंडियन सिटीजन मुस्लिम कम्युनिटी. 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लॉ शाह बानो केस जो था हमारा शाह बानो केस, उसमें उन्होंने वर्डिक्ट दी द डिफरेंस ऑफ सिविल राइट्स. जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को. और फाइनली 2015 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया द नीड ऑफ यूसीसी. सो द डायलॉग ऑफ फॉर यूसीसी वाज स्टार्टेड बाय द लॉ कमीशन इन द ईयर ऑफ 2016 में. राइट, चलो. बट मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44, ये DPSP से हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल. It's not legally enforceable. So देखो, argument in favor of UCC. It will integrate India. Yes. इससे फायदा क्या होगा? It will help in bringing every Indian despite his caste, religion or tribe under one nation civil code of conduct. Second, इसमें क्या benefit होंगे, क्या फायदे होंगे? That will help in reducing vote bank politics. So uniform civil code will also help in reducing vote bank politics that most political parties indulging in during every elections. जिसको ऐसे समझो, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को खड़े करते हैं. किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सिख की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ सिख कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. राइट, यूनिफॉर्मिटी में ऐसा नहीं होगा, एक लॉज होंगे उसके. इससे पर्सनल लॉज आर ए लूपहोल. By allowing personal laws will have constitute an alternative judicial system that still operates on thousands of years old value. So uniform civil code that would change that. Third one, it would be a sign of modern progressive nation. It will help the society move forward, take India forward its goal of becoming a developed nation. Next one, it would be the more rights to the women. A uniform civil code will also help in improving the condition of women in India. And all Indians should be treated same. All the laws related to marriage, inheritance, family, land should be equal of all Indians. और ये एक real secularism को define करेगा. It means that it will limit the freedom of people to follow their religion. It just means that every person will be treated the same. Many provision of personal laws violate human rights. जैसे Article 24, 25 and 26 guarantees the freedom of religion, and UCC is not opposed to secularism. So in short, अगर आप देखें my friends, तो जो codification है and unification of the variegated personal laws that will produce a more coherent system of laws. This will reduce the existing confusion and enable easier and more efficient administration and laws by the judiciary. Next one article talking about डीलिंग विद गवर्नमेंट डेट. इसमें क्या चीज़ बात की गई है कि सॉरी, aftermath of COVID-19 pandemic that has led to center and state accumulating a mountain of debt, bringing it down will be a challenge for the next government when it sworn in after the Lok Sabha polls. मतलब इसमें जो एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, that will end its second term, that will overall public debt in excess of 80% of India GDP at current market price.
तो इसमें IMF का हमारा क्या कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या कहना है? So according to International Monetary Fund data, general governance date, the combined domestic and external liabilities of both the center and the state touched 84.4% in GDP in 2003 and 4, the last year of earlier NDA government under Atal Bihari Vajpayee. So अभी भी आपने देखा होगा बजट में जो गवर्नमेंट अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेंडिंग पे सबसे ज़्यादा GDP का पैसा खर्च करती है, मतलब किसी भी कंट्री से अगर आपने लोन लिया हुआ है वो पैसा आपको रिटर्न में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है. So Modi government second जो इनिंग थी इनकी second innings that saw the debt GDP ratio soar to 75% in 2019-20 and peak at 88.5% in 2020-21. Right. So this is very important to understand. Why the debt spiked? The most obvious reason is that the COVID-induced disruption that forced governments to borrow more to fund additional public health and social safety net expenditure requirements amid drying up to revenues. Okay. How can debt be reined in? FRBM Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act जो हमारा that envisages limiting the center gross fiscal deficit to 3%. अब FRBM Act जो है वो 3% के लिए कहता है. FRBM Act का मतलब होता है माय फ्रेंड्स, FRBM मतलब फिस्कल डेफिसिट, fiscal responsibility and budget management. So FRBM basically budget के एक procedure है and FRBM Act that envisage limiting the center gross fiscal deficit to 3% of GDP by 2022 and 2021. So that target and also that of government debt that has since practically been thrown out the window. अभी तक 2007 में ही हम इसको अचीव कर पाए थे, अदरवाइज 5%, 6% ये हमारा डेफिसिट हमेशा आगे ही रहता है. सो गवर्नमेंट की जो डेट है एंड बोरोइंग्स है दैट फिस्कल डेफिसिट आर यूजुअली कोटेड एज द रेशियो ऑफ GDP एट करंट मार्केट प्राइसेस. सो दिस बीइंग सो हाई नॉमिनल GDP ग्रोथ, the denominator rising faster than the numerator and can go some way in showing the government debt problem GDP growth. and जो ये रेशियो है हमारा सेकेंड एंड थर्ड वे का उसे भी कम करने की जरूरत है. So this actually happened in the 2003 and 4, 2010 and 11 when general government debt is already noted from 84.4% to 66.4%. So India probably needs a combination of both fiscal consideration and growth from output more than inflation to deal with its current debt woes. नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स के बारे में. अभी रिसेंटली आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न अवार्ड दिया गया. अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, ना दिया नहीं गया, अनाउंस किया गवर्नमेंट ने. इसमें आपको, और ये जो भारत रत्न अवार्ड होता है 1954 में स्टार्ट किया गया था. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन और C राजागोपालचारी, the 3 person was the first recipient of भारत रत्न अवार्ड. और यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है. उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एंड फोर्थ हाईएस्ट में आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. देख सकते हो आप इसमें C राजागोपालचारी 1954, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, CV रमन को 1954 में. बजट ब्रेकडाउन, ये ऑलमोस्ट सिमिलर आर्टिकल्स हैं. इसमें आपको ये चीज़ें बताई गई है कि दिस ग्राफिक्स दैट शोज दैट लाइक द सेक्टर वाइज बजट एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2025. सो बिगर द रेक्टेंगल द हायर द प्रपोज स्पेंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2025, राइट. सो एज यूजुअल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को अमाउंट पे करना पड़ता है 11,90,044 करोड़ एज अ स्पेंडिंग. सो यहाँ पे जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा हम पैसा खर्च करते हैं. और आप ये देखेंगे कि एजुकेशन पे जो है हमारा वो 1,24,638 करोड़ रुपीज़ ही हम खर्च करते हैं, राइट, विच इज नॉट टू गुड. IT और टेलीकॉम पे हम इतना ही कम खर्च करते हैं. तो दिस शोज कि गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट का मैंने आपको मतलब ही बताया था. जब आपकी इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रही है, उस केस के लिए हम यूज़ करते हैं. अब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है.
अब देखा हो क्लैट में भी ऐसे ऐसे पैसेज आते हैं, द पाथ टूवर्ड्स प्लूरलिस्ट सिविल सोसाइटी। यहाँ पे देखो इसमें मेंशन क्या किया गया है, during the inaugural session of new parliament, controversy erupted after members were gifted copies of Indian Constitution when the preamble appeared to have dispensed with the term socialist and secular. आपको पता है ये जो socialist है and the word is secular, the word secular was enshrined in the Article 42nd Amendment Act 1976 में. So the meaning of the character of our popular sovereignty is often treated as a convenient myth, as a purely abstract assumptions in our civil society discussion. Yet, as constitutional scholar, यहाँ पे बताते हैं Constitution of India में that popular sovereignty and democratic transformation. And why it is important? So when we reduce sovereignty of the political community to mere state sovereignty, we reduce the constitutional promise given above the vague aspirations that floating in either. So the constitution that can only remain a living force in our democracy as long as fresh. We the people of India, आपको पता है यहाँ जो preamble में जो word use करते हैं we the people, which means we means क्या होता है? It defines the entire citizen of this country. So that can somehow approximate to discerning citizenry which effectively discharge its agency as a vigilant participants. So यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की कोट को याद रखना is important. B.R. Ambedkar had framed the preamble in the terms of heralding a way of life which recognize liberty, which recognize equality and fraternity as the principle of life which cannot be divorced from each other. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty will produce the supremacy of few other over the many. And equality without liberty that will kill individual initiative. आप समझ रहे होंगे कि B.R. अम्बेडकर साहब का जो फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोच थी उनकी, कि जो भारत का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, which recognize the liberty, which recognize the equality and the fraternity as a principle of life which cannot be separated from each other. तो इस कोड को आपको हमेशा याद रखनी है कि लिबर्टी को cannot be divorced, cannot be separated from the equality, equality cannot be separated from the liberty, and nor can liberty and equality be separated from fraternity. क्योंकि बिना equality के liberty would produce the supremacy of few over the many. Equality without liberty that will kill individual initiative. So equally he refused to the harbor naive presumptions about the self-perpetuating character of these constitution principles. इस ऐसे में उन्होंने अंबेडकर साहब जी ने भी कोट किया बुद्धा and the future of religion. He wrote, Buddha also did not believe the law can be guaranteed to be a breachers of liberty or equality. In all society, law play a very important part. It is intended to keep the minority within the range of social discipline. Since the majority is constrained not by law but by the morality, Ambedkar held the religion in the sense of morality must therefore remain the governing principle of every sector. So, यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो यहाँ पे गांधी क्या सोच थी, अजय सकारिया ने एक्सप्लेन किया था, स्वराज फॉर गांधी डिड नॉट कन्फाइन इटसेल्फ फॉर मैकेनिक सेल्फ रूल. सॉरी. So Gandhi practice for ahimsa cannot be divorced from the insistence on recognize deeply featured self, and obvious सी बात है, the path towards a pluralist civil society must thus the forge through honest and introspective dialogue. This is not the shallow but the commonplace mode of dialogue. Now a sunshine initiative. यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने इंटरिम बजट डे की स्पीच में उन्होंने बताया था कि 1 crore household in the country using rooftop solar panel. This would help households save 15,000 annually. इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी. Now we move to the next article. अब देखते हैं आर्टिकल हमारा में क्विक टिप्स में क्या है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स को लर्न करने के लिए
ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के। इसके लिए फ्रेज वर्ड को लर्न करो, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूएन की? यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है माय फ्रेंड, ये है आपकी फेसर्स, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। और दिल्ली सल्तनत के किंग को कैसे लर्न करेंगे? सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। एस स्टैंड फॉर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। और ये किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछे थे कि हम अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। यू कैन सी द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Here we talk about Indian polity with Article 15 talking about discrimination, 17 untouchability, Article 19 freedom of speech and expression, Article 124 about the Supreme Court, and Article 214 about the High Court, and 316 जो है talking about procedure of constitution amendment, 51A talking about fundamental rights, 343 से 351 about Hindi language, and Article 24 talking about the children's below 14 years that cannot work. So you should help of the mind maps that you can easily recall all the important articles. And there are 3 articles which is related to the emergency, Article 352, 356 and 360. One is national emergency, state emergency and finance emergency. Now let's move to the questions of the day. और पहला क्वेश्चन है आपके सामने is here. Exercise Desert Night is conducted by, और ये conduct करती my friend Indian Air Force. So Indian Air Force along with French Air Space Force and UAE Air Force purpose to conduct joint military exercise. Corruption Perception Index. So Corruption Perception Index है कौन रिलीज करता है? Economist Intelligence Unit, Oxfam International, Transparency International and United Nations Office on Drugs and Crime. So C is the right answer. India has been ranked 93 out of 180 countries in the Corruption Perception Index according to Transparency International. और स्केल करते हैं 0 to high. 100 मतलब very clean, 0 means highly corrupt. Consider the following statements that related to annual financial statement. मतलब बजट की बात हो रही है. Budget word is nowhere mentioned in the constitution. So the annual financial statement is divided into 3 parts. One is consolidated fund, contingency fund and public account. And yes, this statement is correct one. All revenues raised by the government, money borrowed and received from loans given by the government flow into the consolidated fund of India. Article 112 of the Constitution requires the government to present a parliament a statement of estimated receipt and expenditure in respect of every financial year. Second statement is also correct and third is also correct. So all 3 statements are correct. So now the answer would be here D. Shekri and Bhumija are the terms associated with donation to temples, rock used in temple construction, Moore's temple architecture and temple management board. So जो अभी रामलला की राम मंदिर है, it is in the Ayodhya, and that temples design the Nagara temple styles. Nagara जो temple styles होती है उसी में आता है आपका ये Shekri and Bhumija. So that is the modes of temple architecture. Now the next one, last questions about which is the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka, and the answer is here James Princip. So Ashoka, he was the son of Bindusar, his other name was Devanpriya and Piyadasi. He was crowned the throne in 269 BC. He was famous for the battle of Kalinga that was fought. Kalinga kahan pe hai, my friend? It was in the Odisha. It is present day in Odisha in 261 BC. James Princip was the first to decipher Ashoka edict's inscription in 1837. So he was from the Maurya Empire. And Maurya में 3 सन थे, Chandragupta Maurya, Bindusar and Ashoka.
So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Stay tuned. We'll meet you tomorrow, the same time. Thank you so much for this session. We'll meet you tomorrow. Till then, bye-bye and take care.